Good afternoon, students. So today I'm going to start the experiment number 7. I think it is experiment number 8. Okay, experiment number 7 I have completed. So you just make it change here. It is experiment number 8. So experiment number 8 is again the analysis of frame. And before that, I have taken the experiment number 7 is analysis of frame, and this is experiment number 8. So uh, in this experiment also we are going to see the analysis of frame. So in the last experiment, in experiment number 7, I have taken the frame uh, using moment distribution method, in which the frame was there is a both leg vertical. So here I'm going to take the one leg incline. Okay, there should be one leg inclined here. So this is the problem statement. You have to analyze the frame with one leg inclined. Okay, make it correction here. And again, it is experiment number 8. So in unit number 5, we have to study about the analysis of frame, and in which we are going to see the two type of the frame, where the first type of the frame will be both leg vertical, means both the columns will be vertical, and the second type will be one leg incline. And also, if possible, I will take the both leg incline. Okay, but in practical, only you have to perform two type of problem using moment distribution method, that is both leg vertical and one leg incline frame. So that was completed as experiment number 7, and this is experiment number 8. So we'll consider again the frame, and that we have to analyze with the software, and then you have to check that results with the manual method using moment distribution method. Okay, so just now we have started this method. So once you solve any problem, you'll be able to understood how this process is to be carried out. So as we are performing it on software, so this the same way we are analyzing it. Okay, so here you can see that this is a frame. So this frame we will consider it for the analysis, where you can see that this member AB is a inclined member. So that's why it is called as one leg inclined frame, and CD is exactly vertical leg. Okay, so and you can see that the moment of inertia for all the three members are different. I of the column is not same here, and as this is a leg inclined, uh, this leg is inclined leg, so we can say that this frame, it is a sway frame, and there will be the deflection in this frame. So whatever the frame we are going to analyze, that will be sway frame. Okay, so how we can say that this is a frame, this frame is a sway frame, because the mi of the column is not same. Okay, so this is a given frame which you have to analyze. So using moment distribution method, only we can find out. If you talk about the manual method, we can find out only the end moment using moment distribution method, that is final moment we can say. Okay, so that final moment we have to compare with the software results. So MAB equal is how much, then MBA is how much, that we have to see. But the software will give any type of the result, like it will give you the joint displacement, support reaction, member end forces. But as we have to
compare the result with the manual method. So there are some limitations in the methods. So using MDM method, only you can find out the final moments. So you just draw this frame in your copy, okay? And you can see that on member BC there is a UDL of 20 kilonewton per meter, okay? And uh, on member AB there is a point load of 50 kilonewton exactly uh, at the center of that member, okay? And this length is 4 meter, vertical length, that is CD is 4 meter and this horizontal is 3 meter. So this incline become 5 meter. So this 50 kilonewton is exactly acting at the center. So you can see that as this is an inclined leg. So for this member, if you want to check the direction of this 50 kilonewton load, in which direction it is acting, it is exactly acting perpendicular to this member, okay? But as this leg is inclined leg, if you draw the local x-axis of this member, so as you know that Lx, that is local x or member x, is always from starting point to ending point. So for member AB, the local x is always from A to B. Local x जो रहेगा along member AB रहेगा, और local y axis जो रहेगा वो perpendicular to local x axis. ओके, सो यहाँ पे जो अपन बोलेंगे कि दिस 50 किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग इन द लोकल y डायरेक्शन, ओके? मेंबर के y डायरेक्शन में वो एक्ट हो रहा है, एल वाई डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. एंड इफ यू वांट टू से दैट ग्लोबल एक्स डायरेक्शन और ग्लोबल y डायरेक्शन में अगर अपने को इसको करना है तो उसके लिए आपको उसके components find out करने पड़ेंगे. That is 50 cos 30 in global x direction and 50 sin theta will be in the global y direction. Okay, so why I told you this, this 50 kilonewton is acting in the local y direction, because when we are in case of software, when we are uh, applying this load, means when we are assigning it, it will ask you that in which direction it is acting. So like in member BC, this 20 kilonewton load is acting in y direction. So horizontal member में लोकल एक्स एंड लोकल वाई और ग्लोबल एक्स ग्लोबल वाई सेम रहता है, तो ये ग्लोबल वाई डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. बट एज दिस मेंबर इज इंक्लाइंड मेंबर, इट्स लोकल एक्स एंड ग्लोबल एक्स, लोकल वाई एंड ग्लोबल वाई विल बी चेंज. ओके, सो यहाँ पे वी कैन से दैट दिस 50 किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग इन लोकल वाई डायरेक्शन. ओके, ग्लोबल वाई डायरेक्शन में अगर आपको उसको एंटर करनी है वैल्यू, for that you need to find out the component of that 50 kilonewton. But it will be easy that you enter this 50 kilonewton load in the local y direction, and that we will see while analyzing this frame. Okay, now before to create this model in the software, very first what we are doing, we are finding out the coordinates of all the four nodes. Okay, every time we are doing the same process because we are going to use the coordinate method. Okay, so every time we are entering the value of coordinates, then we are uh, after we'll get the nodes, we are drawing the that frame. Okay, so before to proceed in the software, first of all, we'll have to note down the coordinates of A, B, C, and D. Okay. So, what will be the coordinates of A? Coordinates of A. Any one of you? What is the coordinate of A? Tell me the coordinates of A, B, C, and D.
What is the coordinate of A? Any one of you, please unmute yourself and tell me the coordinates of A, coordinate of B, coordinate of C, and coordinate of D. Because there are 41 members here. So out of which anyone can answer. Otherwise, I will ask. 0, 0, 0. Then coordinate of B. 3, 4, 0. 3, 4, 0. Coordinate of C. 7, 4, 0. Okay. Then coordinate of D. Coordinate of D. वही आएगा नहीं ना. 0, 4, 7, A 0, से D 0. कितने डिस्टेंस तक है? 7, 0, 0. Yes, yes. So I hope that everyone should know how to find out the coordinates. Okay. So whatever he told, it is right. So you want to write down it in your copy, you can write it. Okay. So we got this coordinate of all 4 points. Then I will start this start window and we will create this model in stat. So first of all, we are creating a new project. So out of this project task, we'll select this new project. So click on new project, then click on plane, then give the file name. Okay, as we are going to analyze a frame, I'll give this file name as frame 2. Then location, already so many times I told you that we'll have to save this file in D drive. Okay, length unit is meter and force unit is kilonewton. Then click on next. Always we are going with the add beam option. Okay, then click on finish. So this is a stat window, and here in the middle of this we have to create that same model if you have drawn it in your copy. So one by one we'll create that model. So first of all, you just close this default grid and enter the nodal coordinates. So node 1 is node A, okay, that is 0, 0, 0. So 0 enter, we'll get node 1, that is node A. Okay, then node 2 coordinates, that is 3, 4, 0. So 3, 4, 0. Then coordinates of node 3, that is 7, 4, 0. So 7, 4, 0. And coordinate of C, okay, and coordinate of D, it is 700. Okay, so these 4 points we got. Okay, and then click on the empty space, and then from the top of the side you can see that there are the various views. Okay, you can see these views. There is a front view, side view, top view, bottom view, isometric view also there. Okay, so from this view always we'll have to select this view. Okay, this view where you can see my cursor. Okay, so this view you have to select. So this is a we can say that this is a front view. So this is already selected here. Okay, you can see this x axis is on the x horizontal and y is vertical. This is a plane structure. Okay, this is a two-dimensional structure. So once you got this node, then with the help of this add beam option, okay, you can see this cursor exactly at the corner side. You'll get this cursor. You just select this cursor. This option is called as add beam option because we are going with the add beam option. So we'll select this. Okay. Now once I'll click here, this option or this cursor is to be selected. Now with the help of this cursor, we will join node to node, means we'll
connect that node to other node for getting a members. So there is three members are there. So we'll connect it one by one. So from bottom to top, okay, the connectivity you just see that. So from bottom to top and left to right, in this way you have to connect it. Okay, so this is node 1 to node 2. You'll get first member, that is beam 1, node A to node B, then node 2 to node 3, okay, and then node 3 through, you can draw it from bottom to top also. तो bottom से अगर आप join करोगे तो 4 to 3 हो जाएगा, top to bottom करोगे तो 3 to 4 होगा. ओके, तो इसमें कोई ऐसा आपको गलत नहीं होगा. ओके, you can go with in the clockwise direction also. Okay, but just what we are following is that you just connect your member from bottom to top and left to right. Okay, then in this way. Okay, so 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Okay, so this in this way we have connected the members. Okay, then after creating this model, okay, frame is created. Okay, it is over. Then what you have to do, you have to give the property to this frame. Okay, so now you can see that we are in modeling. Okay, there are various options here. Only we are taking this option, that is modeling. In that modeling you can see that here there is a setup, geometry, general and analysis and print, and then there is a design. So as we are going for the analysis, only 3 steps we are following. We are following geometry, then general and then analysis and print. So geometry में we are creating a modeling. Okay, modeling में अपन क्या करते हैं, we are creating a nodes and we are creating a members. That is what is the modeling. Okay, now once it is over, next we are going in general. Okay, so after that you just click on general. Same steps is always there. You write it down in your copy, note down करो उसको. All the time जो अपन ने पूरे analysis किए हैं, same steps अपन ने follow किए हैं. Okay, because this is very important at the time of your viva. Actually आप उसको perform नहीं कर रहे हैं, but while taking the practicals, every time I told you the steps. Okay, so at the time of viva ये पूरा आपको पूछा जाएगा कि लोड असाइन करना है तो विच ऑप्शन वे आर चूजिंग, प्रॉपर्टीज करना है तो विच ऑप्शन वे आर टेकिंग. तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए. ठीक है, एंड एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग्स. सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड हाउ टू perform the analysis in the software. Okay, then after this just click on general. So once you click on general, there is a window will open here. Okay, out of this there are various options. Okay, but when we are going in plane structure like beam में और frame में, जब भी अपन ने analysis किया है, अपन ने ये define का option choose किया है. What we are going to define, which type of the section is this and what will be the size of your section. So as you can see that there are 3 members, out of which this horizontal member we are calling it as a beam and these 2 vertical members we are calling it as a hello, yes. So for that what we have to do, we have to give the size of the section. So as the size is not given here, you can assume the size. Okay, and again while giving the size to the section, we'll have to check the mi of your frame, moment of inertia of beam and moment of inertia of column. So here here you can see that the moment of inertia for member BC is 2i and member AB is also 2i.
and for member CD it is I. Okay, so MI is different. Okay, so I is BD cube by 12. We will consider this is a rectangular section, rectangular beam and column B rectangular section ही है. तो we'll consider this, and इस member BC और AB का distance is 200. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. So from this, we will select this option, that is define. Then out of this, which option we will consider? We'll consider the rectangular section. So this is a rectangular section. Now the size is not given. We'll assume the size. To write down the size of the section is, suppose I will assume it 300 by 450 mm. 300 by 450 mm. Yani B is 300 mm and D is 450 mm. Okay. So यहाँ पे अपन को enter करना है वैल्यू. तो YD जो रहेगा, that is the depth, that is that I have assumed is 450, that is 0.45, and B I have assumed it's 300, so it is 0.3 because you have to enter it in meter. So ये हो गया size of section. Okay, that is for I, that is 300 by 450. Once you enter this size, section size, the software will directly calculate the value of I, that is BD cube by 12 for rectangular section. So this you have to add it in your list. Okay, but as you can see here, the I of all the members is not same, that is different. Okay, for both the member it is 2I and for one member CD it is I. तो आपको फिर से और एक साइज यहाँ पे एंटर करना है, ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा. तो यहाँ पे फॉर मेंबर ए बी एंड फॉर मेंबर बी सी इट इज 2I. तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे निकाल एंटर करना है वैल्यू. YD की वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, बट ZD की जो वैल्यू है वो चेंज होगी बिकॉज इट इज 2I है. तो जितना भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, सो 2 into I, that means 2 into B into D cube by 12. So that multiplying factor will multiply it with the value of ZD. कोई भी एक इससे मल्टीप्लाई करें. So depth will keep it as it is constant, and we will multiplying that multiplying factor to value of ZD. तो 2 into 0.3 that will become 0.6. अगर 1.5I है तो 1.5 इंटू होगा. 3I है तो 3 इंटू हो जाएगा. तो जितना भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है that you have to multiply with the value of ZD. So 2 into 0.3 it will become 0.6. Okay, and material is concrete, and then you add it in your list. Okay, तो यहाँ पे दो सेक्शन अपन ने ऐड किए हैं क्योंकि I वैल्यू इज नॉट सेम. अगर I सेम है फॉर ऑल मेंबर्स, आपको एक ही सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसको ऑल मेंबर्स को असाइन करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आए हैं, इसीलिए अपन ने दो सेक्शंस यहाँ पे क्रिएट किए हैं जिसमें कि ZD की वैल्यू जितना आपका 2I है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this 2 section is added in the list. Once it is done, then close the window. Okay, so you can see here in properties में reference में ये दो सेक्शन ऐड हो गए हैं. Okay, पहला सेक्शन है is for value of I, and second section it is for value of 2I. It is for value of 2I. Now for this member, for member CD, there is a I value of this column is I, and for member beam 2 and beam 1, or member 1 and member 2, the value of I is 2I. Okay, so we'll assign this first section to this member because इस member का CD member का value is 1. Okay, we'll select this is already selected. Then assignment method, assign to selected beam.
then click on assign. Okay. Yes. Then click on assign. स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? Are you able to see the screen or not? नो मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिख रही है मैम। ओके, तो ये फर्स्ट सेक्शन असाइन हो गया फॉर मेंबर सीडी. देन विल सिलेक्ट दिस इंक्लाइन मेंबर एंड दिस हॉरिजॉन्टल मेंबर. तो हाउ यू विल सिलेक्ट दिस टू मेंबर्स एट अ टाइम? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉप में पहला जो है ये नोड सिलेक्ट करने के लिए अगर आपको यूज करना है तो नोड कर्सर. बीम सिलेक्ट करना है या मेंबर सिलेक्ट करना है तो यू कैन यूज द बीम कर्सर. तो सिलेक्ट दिस कर्सर. ओके, क्लिक हियर. कंट्रोल दबा के रखना है आपको. कंट्रोल दबा के ये मेंबर सिलेक्ट करना और ये मेंबर सिलेक्ट करना. वंस दिस टू मेंबर इज सिलेक्टेड, सिलेक्ट दिस. ओके, फिर से चला जाएगा तो फिर से सिलेक्ट करो इसको. ओके, सिलेक्ट दिस. ये ब्लू है मतलब सिलेक्टेड है, ये रेड है मतलब सिलेक्टेड है. ओके, देन असाइन टू सिलेक्टेड बीम, assign. Okay, so you can see here this is R1 is for I and R2 is for 2I. So this in this way we have given the properties to all the three member. Properties में अपन ने क्या define किया? Size of your member, beam and column both we have considered as a rectangular section and same size of beam and column we have considered. Okay, and accordingly उसका I जो change हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसका सेक्शन डिफाइन किया है. ओके, सो वंस इट इज ओवर, सो जनरल में जैसे आप यहाँ पे आपको ये बोल्ड में दिख रहा है, तो जनरल में अपन 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं. पहली स्टेप होती है प्रॉपर्टीज यानी मटेरियल, उसके बाद होता है सपोर्ट, उसके बाद लोड एंड डिफिनेशन. तो प्रॉपर्टीज इज ओवर, देन यू जस्ट क्लिक ऑन सपोर्ट. ओके, क्लिक ऑन सपोर्ट. Then once you click on support, this window will open there. Here you just click on create. Here you just click on create. Okay, create mein what you have to create? You have to create a support. So which type of the support are there? There are only fixed support at end A and at end D. There is only fixed support. Okay, so by default it is fixed. Okay, and fixed support, as you know that it is restrained in all the direction. So it is restrained in all the direction. What you have to do? You just add it in your list and close it. तो ये fixed support add हो गया. No other support is there. Okay, so where you have to apply the support? You have to apply the support at this node, at the bottom node. So with the help of this node cursor, select this node. Okay, control दबा के आप second node ये नोड सिलेक्ट कर सकते हो एंड सिलेक्ट दिस. ओके, पहले आप सपोर्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद नोड को सिलेक्ट करो. ओके, यू कैन सी दैट ये रेड में आपको दिख रहा है, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस नोड कर्सर वी हैव सिलेक्टेड दिस नोड एंड दिस इज इन ब्लू, मतलब ये सिलेक्टेड है. देन इट विल आस्क यू दैट असाइनमेंट मेथड. सो नोड सिलेक्टेड है, सो असाइनमेंट मेथड ऑलरेडी इट विल टेक
assign to selected node. Then it will ask you that assign to selected node, then click on assign. Click on assign. Then it will ask you that the assignment method you have chosen is assign to selected node. Do you want to proceed? Click on S. Click on S. Okay. Once you click on S, both the support will be assigned here. Okay. This is a we can say that this fixed support is represented like this. Okay. In this stat. Okay. तो ये support भी apply हो गया. ओके अभी सपोर्ट भी हो गया. उसके बाद सपोर्ट के बाद नेक्स्ट है लोड एंड डेफिनेशन. अभी लोड इज एक्टिंग. वेयर द लोड इज एक्टिंग? देयर इज अ मेंबर लोडिंग. मेंबर लोडिंग यानी जो लोड मेंबर पे एक्ट होता है. एंड नोडल लोड यानी जो लोड नोड पे एक्ट या जॉइंट पे एक्ट होता है. बट हियर देयर इज नो नोडल लोड. फ्रेम में हो सकता है. फ्रेम इन केस ऑफ फ्रेम देयर इज अ नोडल लोड एज वेल एज मेंबर लोड ऑल्सो. तो नोडल लोड है तो नोड को ऑप्शन सिलेक्ट करके आप लोड को अप्लाई कर सकते हो. बट हियर इन दिस केस देयर इज ओनली मेंबर लोडिंग. सो टू गिव दैट लोडिंग विच ऑप्शन वी आर सेलेक्टिंग? वी आर सेलेक्टिंग लोड एंड डेफिनेशन. सो क्लिक ऑन लोड एंड डेफिनेशन. वंस आई विल क्लिक ऑन लोड एंड डेफिनेशन, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे. इसमें से अपने को चूज करना है क्लिक ऑन लोड केस डिटेल्स. सो क्लिक ऑन लोड केस डिटेल्स. Click on add. Click on load case details. Click on add. Okay. Once you click on add, यहाँ पे एक प्राइमरी विंडो आएगी. Okay. Then title already it will take the title load case 1 and under that load cases that load case 1 we have to create the various type of the loading. So before to apply the load आपको ये ऑप्शन लेना है. लोड केस डिटेल्स में क्लिक करना है. उसके बाद ऐड करना है. देन लोडिंग टाइप वी आर सेलेक्टिंग ऑलवेज एज डेड लोड. ओके नंबर 1. ओके देन टाइटल लोड केस 1. व्हाट यू टू डू? ओनली यू जस्ट ऐड इट इन योर लिस्ट. ओके यू जस्ट ऐड इट इन योर लिस्ट एंड क्लोज द विंडो. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोड केस डिटेल्स के अंडर लोड केस 1 ऐड हो गया है. अभी इस लोड केस 1 के अंडर अपने को लोडिंग्स देनी है. ओके विच टाइप ऑफ द लोडिंग इज देयर? नोडल लोड है, मेंबर लोड है. ओके लाइक दैट. तो वंस दिस केस इज एडेड हियर, you just click on load case 1. Click on load case 1. Okay, then click on add. Click on load case 1. Click on add. Once you click on add, ये विंडो यहाँ पे ओपन होगी. यहाँ पे यू कैन सी दैट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो सेल्फ लोड बताएगा. उसके नीचे आप देख सकते हो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द लोडिंग्स आर देयर. ओके तो यहाँ पे इन केस ऑफ दिस frame there is a member loading. Load is acting on member, so we will select this member load. We'll select this member load. Again after selecting this member load there are various options are there. तो किस टाइप का लोड एक्ट हो रहा है? एक मेंबर बीसी पे हॉरिजॉन्टल मेंबर पे यूडीएल है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फोर्स. ओके और लेग जो इंक्लाइन मेंबर है दैट इज मेंबर ए बी, उस पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है 50 किलो न्यूटन का. तो पॉइंट लोड को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स. तो पहले अपन सिलेक्ट करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूनिफॉर्म फोर्स. तो यूनिफॉर्म फोर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ये जो फिगर बता रहा है ये पार्शियल लोडिंग का बता रहा है. लेकिन अपने केस में क्या हो रहा है? लोड आपका यहां से लेके यहां तक कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. कौन से मेंबर पे? बीसी मेंबर पे. तो पहले आपको एंटर करना है वैल्यू ऑफ लोड, इंटेंसिटी ऑफ लोड. तो दैट यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी दी है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर. किलो न्यूटन पर मीटर. तो दैट इज 20 किलो न्यूटन बट इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसीलिए वो अपन एंटर करेंगे -20. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1? D1 0 रहेगा क्योंकि अपना लोड यहां से स्टार्ट हो रहा है. ये पार्शियल यूडीएल के अपना लोड यहां से तक कंप्लीट है, इसीलिए इस केस में कंप्लीट यूडीएल है तो D1 की वैल्यू एवरी टाइम 0 रहेगी. एंड D2 इज स्पैन ऑफ योर यूडीएल, मतलब कितना स्पैन है यूडीएल का.
तो हाउ मच द स्पैन ऑफ यूडीएल? The span of UDL is 4. Okay, so D2 is 4. D2 is 4 and D3 is always 0. Okay, and direction it will ask. In which direction it is acting? It is acting in Y direction. Okay, ग्लोबल y है या लोकल y भी बोल सकते हैं आप उसको. ओके, बिकॉज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर लोकल x इज कोइंसाइडिंग विथ ग्लोबल x एंड लोकल y इज कोइंसाइडिंग विथ ग्लोबल y. तो डायरेक्टली राइट ऑलरेडी एज इट इज ये सिलेक्ट करेगा तो वो ग्लोबल y ही रहेगी. ग्लोबल y या लोकल y भी आप डाल सकते हो. ओके, तो वो डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ग्लोबल y. So what you have to do? Only you have to add it in your list. You just add it in your list. Okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये add हो गया. Okay? That is uniform force GY. GY is direction. -20 मतलब downward. 0 यानी D1 and D2 is 4. ये add हो गया. उसके बाद अपने को कौन सा फोर्स ऐड करना है? एक लेग इंक्लाइन लेग है, वहां पे एक्ट हो रहा है. सीडी पे कोई भी फोर्स नहीं है. तो इंक्लाइन लेग पे which force is there? Concentrated force 50 kilonewton force. So इसके बाद ये फोर्स क्रिएट हो गया, यूनिफॉर्म फोर्स क्रिएट हो गया. उसके बाद अपन क्रिएट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स. सो क्लिक ऑन कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स. ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ P. तो P इज एक्टिंग इन द, अभी P फोर्स जो है मेंबर AB को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो एंटर -50. कितने मैग्नीट्यूड का है? 50 किलो न्यूटन. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1? एग्जैक्टली सेंटर पे एक्ट हो रहा है 2.5. ओके, मतलब यहां से यहां तक कितना एक्ट हो रहा है? 2.5 एग्जैक्टली सेंटर है. तो A टू लोड तक कितना डिस्टेंस है? 2.5. ओके, 2.5 मीटर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2? 0. देन व्हाट डू यू टेल मी, व्हाट इज द डायरेक्शन? What is the direction? Whether it is correct as it is taken as GY, whether we will go with GY or whether we have to change it. Because your member is inclined member, member is not vertical member. Member is not vertical member. So in which direction will be suitable here? Whether it is GY or LY. You just see again this problem. यहाँ पे मुझे आप बताओ GY रहेगा या LY रहेगा? LY रहेगा. LY रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये इंक्लाइंड मेंबर है, ये मेंबर AB है, इसका LX कैसा है? लोकल एक्स एक्सिस कैसा रहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम A टू B यानी अलोंग द मेंबर LX रहेगा. तो ये 50 किलो न्यूटन का लोड है, ये किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? उसके Y डायरेक्शन, मेंबर के Y डायरेक्शन यानी LY डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे चेंज, अगर आपने ये GY सिलेक्ट किया, मान लो कि गलती से GY सिलेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? वो जो फोर्स अप्लाई होगा वो ग्लोबल Y डायरेक्शन में यानी ग्लोबल Y डायरेक्शन में वो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी वो वर्टिकली वो दिखाएगा, वो एकदम मेंबर के परपेंडिकुलर नहीं बताएगा. ओके, वो वर्टिकली होगा, बट एक्चुअल में फोर्स आपका जो मेंबर है, मेंबर AB है, उसका जो LX है और उसका जो LY है, LY को पैरेलल है, LY को पैरेलल है. इसीलिए यहाँ पे आपको वो फोर्स वो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. ओके, तो यू जस्ट चेंज दिस डायरेक्शन टू लोकल Y इंस्टेड ऑफ ग्लोबल Y. ग्लोबल Y मतलब वो ग्लोबल Y डायरेक्शन में एक्ट नहीं हो रहा है, वो लोकल Y डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. ठीक है, सो ये आपको चेंज यहाँ पे नोट डाउन करना है. वंस यू हैव डन दिस, देन क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज द विंडो. तो ये ऐड हो गया. ठीक है, then close the window. Once you have created this, then assign this force to 1 by 1. तो पहला जो है वो UDL है, वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है?
member BC पर, horizontal member. तो select this force, select this member, okay, then assign to selected beam, assign. ये असाइन हो गया. ओके, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे देखो आप सिंबल्स एंड लेबल्स है ना टॉप में, तो यहाँ पे जाके आप स्केल चेंज कर सकते हो. यहाँ पे स्केल पे क्लिक करना, देयर आर वेरियस ऑप्शंस, स्ट्रक्चर, लोड्स एंड रिजल्ट, स्केल्स, लेबल्स. तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन दिखेगा. स्केल में लोड स्केल है, पॉइंट फोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, पॉइंट मोमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है. तो यहाँ पे अभी कौन सा मोमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स. तो यहाँ पे आप चेंज कम ज्यादा उसको करके देखना है आपको, फिर अप्लाई करना, फिर ओके करना. ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से आप उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, बट इट इज अप्लाई. यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो उसको नीचे तो दिखाएगा. ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड फोर्स सिलेक्ट करो, मेंबर सिलेक्ट करो. ओके, देन असाइन टू सिलेक्टेड विथ असाइन. ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली डायरेक्शन चेंज किया तो लोकल वाई, ये मेंबर है, ये लोकल एक्स है, उसके लोकल वाई में वो असाइन हो गया. ठीक है, तो अगर आपको इसमें यस, if you want to see the dimensions, you again click here symbols and labels. यहाँ पे आप डायमेंशन पे क्लिक अगर करोगे तो आपको वो डायमेंशंस भी दिख सकते हैं. ठीक है, लोड वैल्यूज पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई, देन ओके, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ डायमेंशंस. ओके, यहाँ पे -20 और यहाँ पे आप सिंबल्स एंड लेबल्स में स्केल्स में आप जो पॉइंट फोर्स है उसको थोड़ा स्केल आप कम ज्यादा करो उसको, तो वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, कम करके देखना, ज्यादा करके देखना. ठीक है, उसको अप्लाई करना और ओके करना. ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो सिंबल्स एंड लेबल्स में. सिंबल्स एंड लेबल्स में स्केल्स में जाना आपको और यहाँ पे स्केल कम ज्यादा करना. ओके, देन आप उसको चेक कर सकते हैं. एंड लोड एंड रिजल्ट्स में, लोड एंड रिजल्ट्स में स्केल्स में, और यहाँ पे आप देख सकते हो लेबल्स में. लेबल्स में जाके आप लोड वैल्यूज पे क्लिक करना. अगर आपको लोड वैल्यू की लोड वैल्यूज देखना है तो लोड वैल्यूज, आपको नोड नंबर्स देखने हैं, सपोर्ट्स देखने हैं, डायमेंशंस देखने हैं, यहाँ पे क्लिक करना और उसको अप्लाई करना और ओके करना, तो आपको ये दिखेगा. तो यहाँ पे ज्योमेट्री में आपको डायमेंशंस देख सकते हो. देन जनरल, देन वी विल क्लिक इन लोड एंड डेफिनेशन. ओके, so once it is over, okay, so all it is to be done. Then what is the next process? Next is analysis and print. Okay, so I click on analysis and print. Okay, always after clicking on analysis and print there will be no print option. Okay, what you have to do, only you have to edit in your list and close the window. Okay, and close the window. Then click on post print, click on post print, click on define command. Okay, which option we will select? Click on member forces. Okay, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से सिर्फ आपको फाइनल मोमेंट मिलेगा क्योंकि ये मैन्युअली आपको कंपेयर करना है. तो नो नीड टू सिलेक्ट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन, सपोर्ट रिएक्शन. सो क्लिक ऑन मेंबर फोर्सेस, क्लिक ऑन ग्लोबल, क्लिक ऑन ऐड. ओके, देन क्लिक ऑन क्लोज. देन ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. देन प्रिंट मेंबर फोर्सेस ग्लोबल. देन असाइनमेंट मेथड ऑलवेज बाय चूजिंग असाइन टू व्यू. असाइन टू व्यू मतलब असाइन टू होल स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पे मेंबर एंड फोर्सेस निकालना है वहां पे वो कैलकुलेट कर लेगा. तो ऑलवेज ये जो डिफाइन कंबाइंड के ऑप्शंस होते हैं तो वहां पे ऑलवेज असाइनमेंट मेथड यू टू चूज एज असाइन टू व्यू. ओके, तो असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन असाइन, क्लिक ऑन एस. तो देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, मतलब ये मेंबर फोर्सेस यहाँ पे निकलेंगे, एंड मोमेंट यहाँ पे वो कैलकुलेट करेगा. तो ये वंस इट इज डन, okay, then you just click on this empty space. Okay, then at the top of this you can see that there is an option of this analyze. Okay,
सो क्लिक ऑन एनालाइज, यहाँ पे रन एनालिसिस का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन रन एनालिसिस, स्ट्रक्चर हैज बीन मॉडिफाइड, सेव, देयर शुड बी जीरो एरर, देयर शुड बी जीरो वार्निंग। ओके, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सब किया और जो कमांड्स है वो रिपीटेड नहीं दिए हैं, तो रिपीट नहीं किया है या कुछ गड़बड़ की, तो वहां पे आपको एक वार्निंग आ सकता है, एरर भी आ सकता है। लेकिन अगर आपने पूरे स्टेप ठीक से फॉलो किया, सो देयर शुड नॉट बी एनी एरर, देयर शुड नॉट बी एनी वार्निंग। वार्निंग अगर है तो आपका प्रोग्राम रन होता है, बट एरर अगर है तो प्रोग्राम रन नहीं होता है। ओके, वो आपको एरर निकालना पड़ेगा, या फिर अगर आपने मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं दिया है या एक आधी स्टेप आपने मिस कर दी, तो प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। ओके, तो जीरो एरर, जीरो वार्निंग, उसके बाद क्लिक ऑन व्यू आउटपुट फाइल, क्लिक ऑन डन। So here you can see that this is the output of your frame. Okay, and here you will get the value of moment. तो ये मोमेंट की ही वैल्यू आपको चेक करना है। ये इट विल गिव ऑल द मेंबर एंड फोर्सेस, इट विल गिव द सपोर्ट रिएक्शंस in x and y direction, but that is not possible using MDM method. So only we can compare your result with this results. Okay, that is z, तो moment AB, moment BA, ओके, एक प्लस है दूसरा माइनस है, देन BC CB CD एंड DC, लाइक दैट। ओके, AB BA BC CB CD DC, तो ये मोमेंट है। तो ये मोमेंट आपको, फाइनल मोमेंट आपको जो MDM से मिलेंगे, जो मैन्युअली आप सॉल्व करेंगे, उससे आपको ये कंपेयर करना है। तो देयर में भी लिटिल बिट एरर, मैनुअल थोड़ा सा आ सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट वो मैच हो जाता है। ओके, तो इन दिस वे वी कैन कंपेयर अवर सॉफ्टवेयर रिजल्ट एंड मैनुअल रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपके सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स रहेंगे, और ये और फिर आपको ये से मैन्युअली एनालिसिस करके उसको सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो वी कैन नॉट, यू कैन नॉट परफॉर्म इट। ओके, इसीलिए सिर्फ आपको उसको मैन्युअल कैलकुलेशन करके उसको सबमिट करना है। ठीक है, so this is the overall of your experiments. Okay, total 8 experiments is completed here. Okay, then remaining 2 experiments जो है, that is only the hand calculations. Okay, that I will tell you afterwards. Okay, so जो performance है, तो 8 practicals we are performing on the stat software. Okay, और moment distribution method पे अपन 2 इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, जिसमें पहला फ्रेम वी आर कंसीडरिंग सिंपल फ्रेम, एंड सेकेंड वी आर कंसीडरिंग इंक्लाइंड फ्रेम। ओके, सो इज देयर एनी डाउट? Is there any doubt? Because I know that there are various doubts to having to you, because आप उसको परफॉर्म करके नहीं देख रहे हैं, बट दोज हु आर हैविंग दिस सॉफ्टवेयर, वो आप एक बार इसको करके देख सकते हो। आई हैव अपलोडेड ऑल द वीडियोज इन योर क्लासरूम्स। ओके, उसको आप एक बार देख के या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, और ये जो प्रैक्टिकल आज हुआ या लास्ट वीक हुआ, that also I will upload it in your classroom. Okay, so that you can see it and you can make it revise again. Okay, so now here I will stop. So here I will stop now, and please don't leave the class. Regarding